Today's resource person, Dr. Mrs. Babita Yadav Madam, is going to speak on the topic data analysis using SPSS. She is working as an assistant professor at Department of Business Management, Dr. Harisingh, Gour, Central University, Sagar. Her teaching areas are HRM, HR, Accounting, Research Methodology, International HRM, OB, Managerial Communication, etc. Her research interests are in human resource management, employee motivation and satisfaction, consumer behavior, talent management and marketing. Her qualification is PhD, NET, JRF and MBA and MA in economics. She has published more than 20 research papers in various good quality, peer-reviewed, high impact factor national international journals. Some of the research papers are also published in UGC Care listed group second journals. She has been participated and presented papers more than 35 in national and international conferences and seminars. She has acquired a vast teaching and research experience of more than 15 years. She has associated with different distinguished universities like Guru Gahidas Central University, Bilaspur, RDVV Jabalpur University, IGNOU Sikkim Manipal University of Distance Education and Manit Gopal Bhopal. She has been invited for guest lecture and resource person in many colleges and universities. She is also a member of editorial boards in some reputed journals of related discipline. She is holding life membership of Indian Commerce Association, Indian Academy of Research Association, Tamil Nadu, Madhya Pradesh, Economic Association, South Asia Management Association and Inspire Jaipur. Presently she is also project coordinator of BBA and MBA courses, member of Scrutiny Committee, Syllabus Committee and departmental coordinator of NAC. She is authored for 4 edited books and 2 textbooks in her credit and also awarded with the Most Inspirational Management Teacher Award in the year 2016 by South Asia Management Association. Recently she has conducted one UGC sponsored short-term course on advanced research methodology using SPSS. She has been invited as a resource person and delivered lectures in AICTA Atal Faculty Development Program organized by Assam Central University, Silchar. Thank you, madam. I invite you for joining here as a resource person and to give your best speech today, and I welcome all the participants. Today my organizing team committee is engaged in other programs, so I myself conducting this. Thank you to all, and I request you to start your speech to understandable to all. Thank you, madam. Thank you, sir. To all, thank you so much for your kind words, and it is my pleasure to be here. I hope I am clearly audible. Yes, madam, audible. Yes, ma'am. I would like to give special thanks to Principal Bedkar sir for giving me this opportunity to act with you all. The topic of my today's session is data analysis using SPSS. As we know that research plays a very crucial role in higher education. The Government of India, MHRD, UGC, in every these institutions are focusing too much on the research output or the quality of a research publication. So one of the most common problem with by the research scholars are analysis of data, how to analyze the data, especially in PhD thesis or while writing the research papers. So in a very short time, like sir has given me 45 minutes, so it is not able to cover all the topics, but I will just give an overview of this software, what is SPSS and how we can do a simple analysis
using the SPSS. So, as sir told me that most of you are faculty from commerce, management and other discipline. So both the language, मैं both हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपसे चर्चा करूंगी ताकि सबको समझने में आसानी. Now I am going to share the screen. PPT is visible to all? Yes, madam. Yes. So the topic of today's session, जो आज का हमारा topic है, data analysis using SPSS. So topics I am going to cover in a very short period. First is what is SPSS, what are the types of window in SPSS, and then enter the data in the software, what are the levels of measurement, and what is the procedure to apply SPSS. Very brief about the descriptive statistics, how we are going to check the normality of the data. So this is the main window of the SPSS software. First we need to install the SPSS software. तो सबसे पहले हमें SPSS पे काम करने के लिए इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होता है. So the trial version level free of cost for 14 days. 14 days आप इसका trial version download करके analysis कर सकते हैं. But this software is available in licensed form, which is quite expensive. तो individually इसको buy करना तो काफी costly होता है. But institutions and colleges and universities, they buy this software for multi-users purpose. So as a new comer, you can use the trial version and can do the practice. I will show you, later on I will show you how this window look like and how we can perform simple analysis using the SPSS. So जब हम SPSS विंडो को ओपन करते हैं तो ये चार विंडो हमारे सामने शो होते हैं. डेटा एडिटर, आउटपुट व्यूअर, सिंटेक्स एडिटर एंड विंडो. तो ये चार विंडो हमारे पास आते हैं SPSS सॉफ्टवेयर में. दिस सॉफ्टवेयर लुक्स लाइक एक्सेल. सभी ने एक्सेल किया होगा. So it looks like a spreadsheet in which there are columns and there are rows. So in this SPSS, this is the main page of the SPSS software where we have two main windows, data view and variable. आपको ये नीचे दो विंडो दिखाई देंगे, एक डेटा और दूसरा है वेरिएबल. डेटा व्यू क्या बताता है? How data view, how the data looks, and variable view, attribute of variable. First to define the variable. तो SPSS में हम जब भी डेटा को एंटर करना होता है तो हम डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकते. सबसे पहले हमारे पास जो वेरिएबल है, सपोज जेंडर इज अ वेरिएबल, एज इज अ वेरिएबल, हाइट इज अ वेरिएबल, इनकम लेवल इज अ वेरिएबल. तो जो भी हमारे पास, जो भी हम स्टडी कर रहे हैं उसमें जो भी हमारे पास वेरिएबल्स है, फर्स्ट वी नीड टू identify the variable and we need to enter the variable in the SPSS. Once we define the variable, then we can enter the data. So the main problem with the SPSS, not a problem, but this rule we have to follow. First we have to define the variable. In a variable, after defining the variable, we enter the data. So it is look like this column. So this is the column. कॉलम में आपको वेरिएबल्स शो होंगे और रोज, जो रोज हैं उसमें आपको केसेस शो होंगे. फॉर एग्जांपल आपने एक क्वेश्चनएयर बनाया, ठीक है, आपने एक क्वेश्चनएयर बनाया, फॉर एग्जांपल कस्टमर परसेप्शन टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर ब्रांड, XY ब्रांड, ठीक है. अब इस आपने 10 क्वेश्चंस रखे, ठीक है, आपने 10 क्वेश्चंस रखे और योर रिस्पोंडेंट इज 50 लोगों से आपने उस क्वेश्चनएयर को फिल्ड कराया. सो दोज 50 पीपल, 50 respondents are the cases. First जो क्वेश्चनएयर होगा वो फर्स्ट में जाएगा, सेकंड क्वेश्चनएयर है वो सेकंड में जाएगा. लाइक दैट यू हैव टू फिल 50 rows. 50 rows means 50 different respondent. आप 50 different लोगों के जो रिस्पॉन्स है उनको इसमें एंटर करेंगे. अच्छा, one main thing with this will work only on the quantitative data.
as you all know, we have two types of data, qualitative and quantitative. Qualitative data which we cannot measure in numbers or we cannot measure numerically, but quantitative data we can measure in numbers. For example, height, age, income, we can measure numbers. So this SPSS work only for the quantitative analysis or for the quantitative data. For example, we have the qualitative data. Suppose we're working on customer satisfaction, okay, or employee perception or talent management. हमारे पास कुछ ऐसा टॉपिक है जो कि क्वालिटेटिव है. So first we convert the qualitative into quantitative. Like we are using the Likert scale. सभी ने Likert scale का नाम सुना होगा, है ना? 5-point Likert scale or 7-point Likert scale. Based on the Likert scale, we try to measure the responses given by the respondent. Like 1, 2, 3, 4, 5. 1 means highly satisfied or 5 means highly dissatisfied. Like this. So in this way, we are trying to convert the qualitative data into quantitative. क्योंकि अगर हमें SPSS पे काम करना है तो में एनालिसिस हम तभी कर पाएंगे जब हमारा जो डेटा है वो क्वांटिटेटिव या नंबर फॉर्म में होगा, न्यूमेरिक फॉर्म में होगा. सो दिस इज द मेन थिंग विद द SPSS. नाउ व्हाट इज डेटा व्यू? रोज आर द केसेस, एज आई टोल्ड यू, कॉलम्स आर द वेरिएबल. तो कंफ्यूजन होते हैं बिकॉज जब आप फर्स्ट इसको यूज करते हो SPSS को तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है टेक्निकली, हाउ टू एंटर द डेटा. सो not enter the data without defining the variable. That's why first you identify the variable. Suppose आपके क्वेश्चनएयर में 10 variables हैं, so उस 10 variables को पहले आपको करना पड़ेगा. Then after defining the variable, you enter the data one by one. Okay, so rows are the cases and columns are the variables. Okay, so in SPSS there are 3 different types of levels of measurement. ये मैं आपको अभी practically show करूंगी. First is scale, second is and third is ordinal. Nominal क्या होता है? The variables which have category but cannot be ranked. जैसे मैंने आपसे कहा gender can be made, okay, color can be white, blue, red, green. Means अगर हमारे पास कोई ऐसा variable है जिसकी category है but उस category को हम rank नहीं कर, हम ये नहीं कह सकते male is better than female or female is better than male or red is better than white. We cannot say like this, we cannot rank. So any variable which is having a category but cannot be ranked, जैसे कि gender, है ना? जैसे for example yes or no, is this brand, yes or no. So this is the nominal data. ऐसा variable जिसकी category है but उस category को हम rank नहीं कर सकते. दूसरा आता है ordinal, the variable which have categories that can be ranked, जिसको हम rank कर सकते हैं. For example लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, है ना? न्यूट्रल है, हाईली सेटिस्फाइड है, हाईली डिससेटिस्फाइड है, डिससेटिस्फाइड है. लाइक वी कैन रैंक द सब कैटेगरीज ऑफ द वेरिएबल. दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनल, जिसको हम रैंक कर सकते हैं. स्केल, इन स्केल लाइक एज, इट इज एप्रोप्रिएट. जिसकी जितनी एज, फॉर एग्जांपल द एज इज 20, तो वी कैन एंटर ओनली 20, है ना? उसमें हम कुछ मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, उसको हम रैंक करते हैं. वेट, इनकम जो है उसको एज इट इज हमें लिखना पड़ेगा. So scale can be continuous or discrete. ठीक है? I hope यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा. Any doubt in this? No ma'am. थोड़ा सा फास्ट जा रही हूँ. Okay. This is the, you see this window. In this window, we 4 वेरिएबल्स. यहाँ पे हमको 4 वेरिएबल्स दिख रहे हैं. पहला वेरिएबल हमारा है नेम, सेकंड वेरिएबल इज एज, थर्ड वेरिएबल इज हाइट एंड FB, फोर्थ इज लाइक फेसबुक. ओके, आर यू यूजिंग फेसबुक, यस और नो? तो यस और नो फॉर्म में हम उसको डेटा को एंटर कर रहे हैं. वी हैव 4 वेरिएबल्स. ओके, सो दिस कम्स अंडर द, अभी मैं आपको इसको प्रैक्टिकली शो करके बताऊंगी तब आपको समझ में आएगा. सो एज आई टोल्ड यू, दिस लेवल ऑफ मेजरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन SPSS. आपने वेरिएबल तो ले लिया, लेकिन उसको प्रॉपरली अगर उसको क्लासिफाई नहीं किया कि वो ऑर्डिनल है, नॉमिनल है कि स्केल, देन द होल कैलकुलेशन विल बी रॉन्ग. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड
कि कौन सा वेरिएबल हमारा नॉमिनल है, कौन सा वेरिएबल हमारा ऑर्डिनल है, कौन सा स्केल है. फॉर सपोज योर वेरिएबल इज एज और उसको आपने नॉमिनल कर दिया या ऑर्डिनल कर दिया तो आपका कैलकुलेशन गलत हो जाएगा. ओके, सो बिफोर यूजिंग द एसपीएस ट्राई टू मेक योर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर कि विच इज अ नॉमिनल डेटा, विच इज अ ऑर्डिनल डेटा. तो ये प्रैक्टिस से आपको समझ में आएगा. ठीक है, जैसे मैंने आप जेंडर, नंबर ऑफ फीमेल इन अ रूम, तो इट कैन बी नंबर लाइक 20, 30. इसको हम रैंक नहीं कर रहे हैं इसलिए वो नॉमिनल है. उसी तरह ऑर्डिनल, स्केल डेटा. So you need to categorize ki which variable is ordinal, which variable is nominal, because depending on the level of measurement we use the statistical tool. टेस्ट रिग्रेशन लगाना है, एनोवा लगाना है, ये सारी चीजें इस पे डिपेंड करेगी कि आपका वेरिएबल किस मेजरमेंट का है, वेदर इट इज अ ऑर्डिनल, वेदर इट इज अ स्केल. हाईएस्ट जो मेजरमेंट होता है, हाईएस्ट लेवल ऑफ एनालिसिस जो होता है वो स्केल डेटा पे होता है. व्हेन आवर डेटा इज स्केल टाइप देन वी कैन अप्लाई एडवांस टेस्ट लाइक रिग्रेशन, एनोवा, एफ टेस्ट. ओके, लेकिन अगर हमारा जो डेटा है वो नॉमिनल नेचर का है तो उसमें हम सिंपल फ्रीक्वेंसी लगा सकते हैं उसको. उसी तरह हमारा ऑर्डिनल डेटा है तो उसमें हम थोड़ा सा और एडवांस कर सकते हैं, मीन, मीडियन, मोड निकाल सकते हैं. सो लाइक दैट यहाँ पे ज्यादातर गलतियां होती हैं. पीपल डूइंग मिस्टेक्स इन दिस, इन सेलेक्टिंग द लेवल ऑफ मेजरमेंट. so this thing should be very clear. So I show here that in case of nominal we can use graph and percentage. आपने देखा होगा सर्च वर्क में या प्रोजेक्ट में सिंपल केवल ग्राफ बना देते हैं based on the data we have. We use the graph and chart like pie chart or the bar chart and then make interpretation. Okay, we just simply analyze the data on the basis of percentage count. But if the data is ordinal in nature, थोड़ा सा हम और इसमें एडवांस मीन, मीडियन, मोड उसका निकालते हैं. स्केल तरह का डेटा है तो हम उसमें और एडवांस टेस्ट करते हैं, है ना, एनोवा, रिग्रेशन. ये सारे टेस्ट हम तभी लगा पाएंगे जब हमारा जो डेटा है वो ये दिस इज द एग्जांपल गिवन. तो वी हैव 3 ये वेरिएबल है. वेरिएबल जेंडर इज अ वेरिएबल, हाइट इज अ वेरिएबल. अब आप ये सोच रहे होंगे कि 1, 2 क्यों लिखा है, 1, 1 क्यों लिखा है, 2, 2 क्यों लिखा है. Can anyone tell me ये what is the meaning of 2, 1 in gender? Anyone? आप लोगों में से किसी ने यूज की? 1 is male, 2 is female. So why we are classifying like this? Can't we write male, female instead of 1, 2? Why we are writing like this? As you rightly said at the beginning that you need to enter only numerical things, not any physical things. Yes. Correct. We can only perform statistical analysis on quantitative data. That's why we need to give them proper coding. Okay, suppose male is 1 and female is 2. It's understandable that 1 is for male. Suppose we want to perform a test only on male, so we can choose only male, only 1 code, not 2. Okay, so depending upon the type of hypothesis we have or depending upon the type of objective we have, we do the analysis. Now I am going to show you how can we do the analysis or enter the data. SPSS window is showing. Yes. So this is the SPSS window. It almost look like Excel. The main difference between Excel and SPSS is Excel is also doing a lot many calculation, but this SPSS is a very powerful tool for creating when you have a big data, when you have a huge complex data, it can perform the task very easily with few commands. So this is the more powerful tool for the data analysis. We can import data from Excel to SPSS. There is an option.
कि हमने एक्सेल में डेटा लिया, वो डेटा को हम सीधे एक्सपोर्ट कर देंगे किसमें, SPSS में, ऐसा भी कर सकते हैं. बट द ओनली थिंग इज वी हैव टू एंटर द डेटा इन नंबर्स. अगर हमारे पास जेंडर का डेटा है तो हमको 1-2 फॉर्म में भरना पड़ेगा. और फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ डेटा ऑन लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड वी हैव यूज्ड लिकर्ट स्केल 1. So 1 is what, 2 is what. You need to denote it, code it properly. Window is showing, SPSS window is showing. No, ma'am. Not showing. Okay, once again I will share. Yes. Now it is visible, na? Okay. So in this presentation we have 3 variable: name, gender and height. Let's see how we can enter the data. What is the procedure? Go to new, file, new and the data. This screen will come. Okay. Now here you 2 windows are there, data view and variable view. Click on the variable view. This is the variable view. The first variable is name. You would like to enter the name of students. Okay. Type. It can be numeric, it can be string. If it is a name can be name only in alphabets. We can write name only in alphabet. If it is in alphabet, we use string of numeric and then click OK. I am not going into detail. Width means suppose somebody is having a very long name, so we have increased the width from 10 to suppose 15. Okay. Decimal, there is no need of decimal. Then label, we can write like what is name of student, values, no need to enter the value, we are not putting any value. Then columns, alignment, we want left alignment, right alignment, so normally we take left alignment. Now the question again, the important thing is measure whether the name of any person is nominal, ordinal or you show here 2 types of measurement is showing. यहाँ पे आप देखिए केवल 2 मेजरमेंट है, ऑर्डिनल और नॉमिनल. स्केल का मेजरमेंट नहीं दिखा रहा है, तो आपको ऑर्डिनल और नॉमिनल में से ही सेलेक्ट करना है. So which one is correct for name? Ordinal. Tell me. कौन सा मेजरमेंट होना चाहिए? Name is nominal or ordinal? Nominal. Nominal, correct. Name is nominal. So यहाँ पे we select nominal. Input means we are entering the data. Input. Now the next variable is, क्या था हमारा next variable? Gender. Okay. See carefully. You need to write gender. Gender लिख दिया आपने. Type. It is not string. Because उसको कोड करना है. जो हमारे पास gender है उसको 1-2 में हमें कोड करना है. तो हम string नहीं करेंगे यहाँ पे. यहाँ पे हम करेंगे numeric. We select numeric variable type and then click OK. Okay. Then we don't need decimals. तो इसको हम 0 भी कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. What is gender? Gender का हमने label gender ही कर दिया. Now how to enter the value? This is important. यहाँ पे click करेंगे. Click here. Then this window will appear. Value labels. We need to label the value. Suppose 1. Write 1. 1 for male. है ना?
one for male, then click on add button, then 2 for female, click on add button and then click OK. So this will automatically come. When you click here, it will show 1 is male, 2 is female. यहाँ पे भी आप इसको left कर दीजिए. Then now you see 3 types of it is showing: scale, ordinal and nominal. Now tell me, gender is which one? Scale, ordinal or nominal? कौन सा होना चाहिए? Ordinal. जेंडर को हम रैंक कर सकते हैं क्या? नॉमिनल मैडम. पॉसिबल. नॉमिनल, यस. यहीं पे कंफ्यूजन होता है एंड दिस कंफ्यूजन इज लाइक बहुत लोग करते हैं इसको, प्रॉब्लम आती को हम ऑर्डिनल कर देते हैं या स्केल कर देते हैं, वहां पे सब रॉन्ग हो जाता है. सो यू नीड टू एंटर द करेक्ट मेजरमेंट. ऐसा नहीं है कि हमने इसको यहाँ पे 1 और 2 लिख तो ऑर्डिनल या स्केल हो जाएगा. नो, बिकॉज जेंडर इज अ कैटेगोरिकल वेरिएबल विच हैज नो मीनिंग. ऐसा नहीं है. 1 को तो हमने सिर्फ डिफाइन किया है, मीन्स 1 फॉर मेल, 2 इज फॉर फीमेल, जस्ट फॉर द कोडिंग पर्पस वी गिवन अ नेम. उसका कोई मीनिंग नहीं है, हम उसको रैंक नहीं कर रहे हैं. सो ऐसे वेरिएबल हम केवल कैटेगरी देते हैं, केवल क्लासिफाई करते हैं, दैट इज अ नॉमिनल वेरिएबल. तो यहाँ पे आएगा नॉमिनल वेरिएबल. एंड थर्ड वन इज हाइट. थर्ड वेरिएबल जो है हमारा हाइट. हाइट इज ऑल्सो न्यूमेरिक. स्ट्रिंग में तो हो ही नहीं सकता. अब वैल्यूज हमें यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम एंटर करेंगे. नाउ हमारा हाइट क्या होगा? स्केल वेरिएबल. इट इज नॉट अ नॉमिनल, इट इज नॉट अ ऑर्डिनल, इट इज अ वेरिएबल. ठीक है. सो वी हैव 3 वेरिएबल्स: नेम, जेंडर. Ma'am, your voice is not there. Ma'am, you are not audible. We will wait for madam to join. I think there is technical issue or some network issue.
फीडबॅक लिंक भरावी का सर तोपर्यंत? चालेल सर. बर. Sir, please contact to madam. Yes. Received message, internet issue, I am trying to connect. ऐसा मैसेज है. Okay sir, okay. Madam, you are muted. So I was asking, blood group is which type of measurement? It is scale, nominal or ordinal? Anyone? Please tell me. Ma'am, it's nominal. Correct. Correct. Because blood group is only the kind A blood group, B blood group. We cannot rank. Okay. So any subcategory which cannot be ranked is a nominal. Okay. So blood group is again a kind of nominal variable. So in research and particularly in SPSS, identifying the right variable and its measurement is very, very important before applying any kind of test. Because the research scholars and the academicians have problem in selecting the appropriate test, whether they go for parametric or non-parametric, which test is right for a particular hypothesis to justify. So you need to justify. For example, my is nominal, so I have taken this test. My variable is the scale, so I have taken this test. Even you can have different tests for different hypotheses. In one hypothesis you can choose regression, in another hypothesis you can choose t-test, depending upon the variable you have. Okay. So this is I would like to trying to say. Now again I am sharing the screen. I will give some practical example.
window is showing, SPSS window? Yes, ma'am. It's showing. Okay, so it's a very simple example. We have only one variable, that is blood group. Now we want to make a chart. देखना है कि कितने लोग A वाले हैं, कितने AB हैं, कितने O हैं. We want to make a chart. ये हमारे पास डेटा है 20 लोगों का ब्लड ग्रुप हमने लिया है और इसका ग्राफ बनाना है. कैसे करेंगे? We go to graph directly. ग्राफ पे जाएंगे. Click on the graph. Click on the chart builder option. चार्ट जाएंगे. Then click on OK. There are different types of charts, bar, line, area, but we are interested in the bar graph. हमें bar graph चाहिए. Simple. Click on this. Double click. The variable हमारे पास कौन सा है? Categorical variable जो है, जो भी categorical variable होता है वो x axis पे जाता है. And this count is the frequency. तो जो भी हमारा categorical variable है उसको हमको x axis पे लेना है. And then click on the OK button. तो इस तरह से आपको, this is the output screen. ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है इसमें ये ग्राफ बन के है, that is the output screen, output window. Okay, so from this graph it is clearly inferred that 6 out of 26 have blood group A and 6 people have blood group O. Only 3 people is having blood group A. सब जो blood group वाले हैं वो A और O हैं. Okay, so in this way you can show with the help of graph. अब आपको चाहिए कि ये numbers आ जाए यहाँ पे. Click on the double click करेंगे. This chart editor window will appear on the screen. Click on the element option. Show data label. Show data label पे click करेंगे. And then click on close. You see that for different bar this value, this figure will come 6, 3, 5, 6 like this. Okay. So this is the descriptive statistics. This table is showing a descriptive statistics. What do you mean by descriptive statistics? To describe the characteristics of the data. What is the mean of your data? What is the standard deviation? What is the skewness? So here we are showing the frequency. Out of 20, 6, 3, 5, 6 is having these many blood. Then we can calculate percentage, then valid percentage and cumulative percentage. So what is the way to get the statistics? Go to analyze, go to descriptive statistics, go to descriptive. There is some error. First we need to go window, then go to analyze, descriptive statistics, descriptive. There is some error. We want to show the, for example, frequency. Click on the statistics button. Click on the standard deviation. Click off. Please off. Babita Yadav, madam. Yes, ma'am. Continue. I have removed her.
Continue, please. I will again sharing the screen. Histogram. What is histogram? One more interesting thing in SPS is histogram is used to check the normality of the data. आपने सुना होगा there are two types of test, parametric test and parametric test. So before applying test we need to check the normality of the data, whether the data is normal or not. तो ये हम कैसे check करेंगे? With the help of graph and with the help of some test. So histogram is one of the way to check the normality of the data. Suppose here we have variable like student weight. What is the weight of the students, different students? ये हमारे पास वेरिएबल है स्टूडेंट वेट, जो कि स्केल टाइप ऑफ वेरिएबल है, स्केल टाइप ऑफ वेरिएबल. दिस इज द डेटा वी हैव. हमारे पास 30 लोगों का डेटा है. वी हैव डेटा ऑफ 30 स्टूडेंट्स. ओके, नाउ वी वांट टू प्लॉट अ हिस्टोग्राम. तो हिस्टोग्राम हम कैसे प्लॉट करेंगे? गो टू ग्राफ, चार्ट बिल्डर, क्लिक ऑन ओके बटन, and then you see here there is a histogram option. Click on the histogram option, click on this first one, this student weight, click on student weight on x-axis, okay, and then okay. So this type of bar chart will appear. Okay, now we want to know whether the data is normal or not. हमें ग्राफ के थ्रू, कर्व के थ्रू हमें देखना है कि ये हमारा डेटा नॉर्मल है या नहीं. तो हम क्या करेंगे? क्लिक, देन गो टू एलिमेंट. इन एलिमेंट देयर इज अ शो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. क्लिक ऑन दिस. वी वांट टू चेक द नॉर्मैलिटी. क्लिक ऑन नॉर्मल एंड देन close. So this type of graph will appear on the screen. Okay, you see this bold line, this is the graph of it, this is the histogram. Okay, this is the normal curve. So normal curve, what is the definition of normal? When mean, median and mode lies at the center. Okay, when mean, median lies at the center, this becomes a norm. So this data, according to this graph, the data is normal. So when our data is normal, use the parametric test. But suppose if the data is not normal, हमारा जो curve है वो skewed हो रहा है, right skewed हो रहा है या left skewed हो रहा है, then in case first we need to convert our data or try to make the data normal. तो normal हम कैसे करेंगे डेटा को? सैम्पल बढ़ा सकते हैं. सपोज यहाँ पे हमने 30 लिया है तो हम और सैम्पल साइज इंक्रीज कर सकते हैं. वन वे इज टू इंक्रीज द सैम्पल साइज, एंड द सेकेंड वे इज ऐसा स्टूडेंट जिसकी हाइट एबनॉर्मल है, जो मीन से काफी अलग है, उस रिस्पोंडेंट के वैल्यूज को हम क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं. उसको हम अपने एनालिसिस पार्ट से हटा सकते हैं. ठीक है. सो द बेस्ट वे ऑफ मेकिंग द डेटा नॉर्मल इज इंक्रीज द सैम्पल साइज, है ना. इसलिए आपसे कहा जाता है कि अगर आपका डेटा नॉर्मल नहीं आ रहा है तो आप सैंपल अपना बढ़ा दीजिए. ओके, सो योर डेटा शुड बी नॉर्मल व्हेन यू गोइंग टू अप्लाई द पैरामेट्रिक टेस्ट. So this is histogram. Then what is descriptive statistics? What is descriptive statistics? Again, very important. This term is used when you are writing paper. Central tendency, you all heard about the central tendency, mean, median and mode. I am not going into detail. Measure of dispersion, range. Range is what? The difference between the maximum value and the minimum, lowest value and the हाईएस्ट वैल्यू. जितनी वैल्यू ज्यादा होगी, जितना डिफरेंस ज्यादा होगा, उतना रेंज ज्यादा होगा. एंड मोर द रेंज, मोर द डिस्पर्शन. डिस्पर्शन का मतलब कि जो आपके पास वैल्यूज हैं, जो डेटा है, वो मीन वैल्यू से कितना
अलग है. For example, we want to get the average weight of student in a class. So we assume the average weight of student in a class is 50. तो अगर हमने 10 स्टूडेंट्स का किया है तो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनका वेट 50 से कितना पास है. अगर 50 से नियर है इसका मतलब हमारा डेटा कम स्क्यूड है. लेकिन बहुत ज्यादा वेरिएशन है इन वैल्यू से तो हमारा डेटा काफी डिस्पर्स्ड है. ठीक है. सो स्क्यूनेस इंक्रीजेस एज द डेटा इज मोर डिस्पर्स्ड. तो फॉर द नॉर्मेलिटी ऑफ द डेटा, नॉर्मेलिटी के लिए क्या होना चाहिए, हमारा जो वैल्यूज है, हमारा जो डेटा है वो मीन के पास पास होना चाहिए, क्लोज इन वैल्यू. ओके. जितना मीन वैल्यू पे क्लोज होगा उतना डेटा हमारा नॉर्मल होगा. सो दीज आर सम, you know how to calculate the mean. So this is so in SPSS you can directly with the help of command choose the mean and you can get all the mean, median, mode. Okay. So this way we can manually we can calculate the mean value, median and so coming to the presentation again. Presentation is visible. If it is visible. Yes, madam. Yes. Yes, ma'am. So the next slide is about this. How to save the data. This question is how to save the data. Again, this is very simple process. Go to the file and when we go to the file, there is a save as option. है ना. आपको save as क्लिक करना है. जैसे आप save as क्लिक करेंगे तो ये विंडो आ जाएगी आपके सामने. तो आप उस फाइल का कुछ नाम डाल दीजिए. फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ फाइल रिलेटेड एम्प्लॉय सैलरी की फाइल है, आप उसको सेव करना चाहते हैं तो यू राइट अ नेम एम्प्लॉय सैलरी एंड ये किस एक्सटेंशन में सेव, .sat. द एक्सटेंशन इज .sat. तो ये आपको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा. देन क्लिक ऑन द सेव बटन. ठीक है. टाइम व्हेन यू वांट टू ओपन द फाइल, गो टू द ओपन and then select that file and click open. It will appear on the main screen. In this way you can save the data file. Sorting of the data. You can sort the data as in a manner or descending manner. For example, आपके पास 100 स्टूडेंट्स हैं, उनको आपको ascending order में अरेंज करना है या descending में अरेंज करना है तो आप उसको सिस्टमैटिकली एक कमांड देके उसको अरेंज कर सकते हैं. आपको आपके पास हाइट है ना, आपको हाइट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो आप उसको कर सकते हो, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा. तो लाइक दैट यू कैन सॉर्ट द डेटा एज पर योर रिक्वायरमेंट. ओके. देन देयर इज दिस इज द बेल शेप्ड हिस्टोग्राम. ओके. दिस इज द हिस्टोग्राम. You see at the center mean, median, mode is equal and this curve is showing the normal distribution. Okay, this is the graph of normal distribution. Now how we can put or extract data from Excel to SPSS? SPSS is much better at handling numeric variables than string variables. Therefore, if you want to transfer data from Excel to SPSS, it is a good idea to ensure that any historical data like yes, no, don't know, male, female are entered in Excel as numeric data. So, like SPS in Excel, if we want to transfer the data from Excel to SPSS, it is better to enter in numeric form. ठीक है. हम पहले से ही न्यूमेरिक और कोड करके रखें. लाइक जेंडर है तो हम मेल फीमेल ना लिख के उसको 1 2 कोड कर दें. ठीक है. अगर इनकम है हमारे पास हाई, लो इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, तो इसको हम कैटेगरी में डिवाइड कर दें 1 2 3. सो ट्राई टू एंटर द डेटा, कैटेगोरिकल डेटा इनटू नंबर्स, एंटरिंग डायरेक्टली so that we can easily export data from Excel to SPSS and then we can do the analysis. Okay. This is all from my side. Thank you so much. Can we have more time, sir? Yes, you can continue, madam, for a few minutes.
You can continue if something Okay. remains. Okay. Okay. So like you see that in this SPSS we have different options, file, edit. When we go to file, this is the save new option, ओपन अ न्यू फाइल. आपको न्यू फाइल जैसे आप वर्ड में खोलते हैं, एक्सेल में ओपन करते हैं, उसी तरह आप इसमें भी कर सकते हैं. ठीक है, न्यू में जाके ओपन कर सकते हैं कोई पर्टिकुलर फाइल. वांट टू लाइक सेव द डेटा, सेव एज गए, सेव एज पे जाके आपने यहाँ पे फाइल नेम को डाल दिया, सपोज स्टूडेंट वेट, स्टूडेंट वेट. मेक श्योर दैट द एक्सटेंशन शुड बी .sav. अगर आप .sav सेलेक्ट नहीं करेंगे तो वो प्रॉपर सेव, तो .sav एंड देन सेव. स्टूडेंट वेट. Now the file is saved. Next example, you want to sort the data, है ना. कैसे सॉर्टिंग करेंगे हम? गो टू डेटा, डेटा में आपको एक ऑप्शन दिखेगा सॉर्ट केसेस. ठीक है, आप सॉर्ट केसेस पे जाएंगे. क्या सॉर्ट करना चाहते हैं? स्टूडेंट वेट, है ना. हमें देख, हम स्टूडेंट वेट को असेंडिंग या डिसेंडिंग में उसको अरेंज करना चाहते हैं. देन क्लिक दिस वेरिएबल, शिफ्ट दिस वेरिएबल टू साइड. Ascending is already selected, you can do descending also. Let's see ascending and then click OK. You see that the student ways arranged in ascending order, छोटे से बड़ा, 35, 37, 38, like this. Okay, so you can sort, and this is very helpful in the analysis of the data. Simply you can go to particular case also. Suppose you are interested in case number 10, तो आप directly भी यहाँ से data, then select cases. इसके लिए हमें दूसरा डेटा सेट चाहिए होगा. इसमें कम से कम हमारे पास 2-3 स्केल वेरिएबल होना चाहिए, तब हो. Then there is another option like compute variable. Okay, you can code the variable into same variable or different variable. There are different options. Okay, then the main important option is analyze, in which there is a descriptive statistics. Descriptive statistics, in descriptive statistics you calculate frequency, descriptives, explore, cross steps, PP plots and QQ plots. ये जो plots बनकर आते हैं, that PP plots and plots are used for checking the normality of the data. Let's see, यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो कैसा आएगा. स्टूडेंट वेट को यहाँ पे शिफ्ट कर नॉर्मल. ओके, ये देखिए ये एक प्लॉट बनकर आ गया. दिस इज कॉल्ड द पीपी प्लॉट. दिस इज द मीन वैल्यू. ये जो बोल्ड लाइन दिख रही है आपको अपवर्ड, एंड दीज आर द वैल्यूज विच आर क्लोज टू द मीन वैल्यूज, है ना. ये वैल्यूज हैं जो अदर वैल्यूज हैं हमारे मीन वैल्यूज को टच कर रही है या मीन वैल्यूज के क्लोज हैं. दैट मीन्स द डेटा इज नॉर्मल. दिस पर्टिकुलर डेटा इज नॉर्मल. ये जो डॉट डॉट्स हैं काफी दूर होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, इट मीन्स आवर डेटा इज नॉट नॉर्मल. सो विद द हेल्प ऑफ पीपी प्लॉट और क्यूक्यू प्लॉट, चार्ट को, ग्राफ को देख के भी ये बता सकते हैं हमारा डेटा नॉर्मल है या नहीं. ओके, अगर ये वैल्यूज जितना क्लोज होंगे मीन के, इट मीन्स डेटा इज द नॉर्मेलिटी. जितना दूर होंगे इसका मतलब स्क्यूनेस ज्यादा है, डिस्पर्शन ज्यादा है, एंड द डेटा इज नॉट नॉर्मल.
See here, in this case, here the data is very deviated, काफी दूर दूर है ना, इस लाइन से काफी दूर दूर है, so this data is not normal, this data is skewed. Then we can also do the check the frequencies, है ना, we want to check the frequency. Go to statistics. अब हमें क्या देखना है इसमें, हमें मीन भी देखना है, मीडियन भी देखना है, मोड भी देखना है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी देखना है, ओके, स्क्यूनेस भी चेक करना, whatever you want, रेंज भी देखना है. Then click on continue. Table will appear on the screen. आप देख पे आपको एक टेबल दिख रहा है. हमारा n कितना था, n is the total number of cases. Total number of cases कितने थे, 30. Missing is 0. Missing 0 का मतलब we have entered all the data. There is no missing value. हमारे पास 30 डेटा था, 30 लोगों का डेटा था, 30 लोगों का डेटा हमने एंटर किया, ठीक है. There is no missing value. यहाँ पे कोई 2 मिसिंग वैल्यू होती तो यहाँ पे 2 आ जाता, ओके. Since there is no missing value, so here it appear as 0. मीन आप देखिए 49.51, मीडियन इतना है, मोड इतना है. This is the standard deviation, skewness and range, okay. So this information is actually the descriptive statistics which explain the characteristics of the data in terms of mean, median, mode, deviation, okay. So this is the descriptive statistics. See, there is a explore button, but here we have one variable. यहाँ पे हमारे पास एक ही वेरिएबल है. जब हमारे पास 2 वेरिएबल होता है तब हम ये एक्सप्लोर ऑप्शन यूज करते हैं. We try to find the relationship between the two. For example, price and demand. We want to see the relation between price and demand. So एक हम डिपेंडेंट में डाल देंगे, एक फैक्टर लिस्ट में डाल देंगे, and then स्टैटिस्टिक्स में डाल के तो वो पूरा एक टेबल बनकर आ जाएगा. But for that we need 2 variables. One is the scale variable, okay. We want 2 scale variable and one is ordinal variable. So these are the higher level analysis like regression. Regression we have linear regression, partial least square method, okay, which is normally used. Non-parametric test also, okay. Then we have correlation in which अगर हम 2 वेरिएबल्स का स्टडी कर रहे हैं then it is called बाई. अगर हम मल्टीपल कोरिलेशन ले रहे हैं, 2 से ज्यादा ले रहे हैं तो it is a multiple correlation, okay. Then we have compare means. We compare the mean. अगर हमारे पास 2 सैंपल है, सैंपल 1 एंड सैंपल 2, और उसके बीच में हम मीन कंपेयर कर टेस्ट और पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट, ओके. One way ANOVA is used when we have 3 sample, A, B, C. When we have 3 sample, we use but when we have 2 sample, we use t-test, okay. So these are some rules which we need to examine before applying any statistical test, okay. So this is the descriptive statistics is the simple way of analyzing the data, describe the characteristics of the data. The next or the higher level of analysis is the inferential statistics, in which we calculate regression and all these, perform all these tests. So before applying inferential statistics, we also do the descriptive statistics. बिना statistics किए हम inferential statistics नहीं कर सकते, okay. So inferential statistics means when we are interested to test the hypothesis. When we are testing the hypothesis, we are actually doing a inferential statistics, okay. So this is about a brief of SPSS. It is a very powerful tool and very useful software for social science researchers like management, commerce, economics, and very simple to use, and there is so many things which you can explore and use in your research work. Thank you so much.
Thank you, Babita Yadav madam, and all the participants. If you want to discuss with resource person madam, you can ask questions or discuss on the software and the programs and about the research statistical analysis. Madam Babita, it was very excellent information, but the thing is that theoretically slightly difficult. What I understand that we need some practice for this. Unless we do Yes, practice, sir. Lot otherwise, of practice. so If sir, if sir will allow me for at least 2 hours, then I'll explain all so, the things. in that context, I request Bedkar Sahab to have a madam another 1 or 2 sessions, because this is very much needed for people like us and research scholars. Very, very useful SPSS. Of course, there are more techniques have come, but this is easy to get actually. Those who are having Excel and have an idea, that they can easily learn this SPSS. Only thing is that time has to be. I don't know whether SAR has deadline of 15 June. I guess आपके पास टाइम रहा तो we can have madam one more session sir. आपसे एक मेरी request sir. बिल्कुल बिल्कुल सर. But overall, madam, it was very, very useful and very people for researchers, for teachers of commerce, management, economics, social science teachers. They will benefit with this SPSS. This is to be learned. If you are not used to it, because when we were studied, this was not there. All we used to do manually, just get the put the information, input and get the output. It's very fast. You can do a lot of analysis part. Really, it's good Yes. to learn this. Entertainment to learn this actually practice at home. How much will take to learn this? It's a very big exercise, sir. At least I think 3 to 5 days is required. Minimum 3 to 2 to 5 days is needed. Please test PSS. There are so many things. I can take one full session on types of measurement like ordinal, nominal. Then what we do after 15 June, we can request Bedkar Sahab to have FDP program on this SPSS. With all teachers can benefit with even the students who are really also. Thank you so much, madam. Thank you so much. Thank you, Dr. Badruddin Ahmed sir. We will request on the behalf of all participants, madam, if she spare time for us, we will invite her for more interactive and example-full lessons. Because Dr. Badruddin sir is from commerce faculty, he always comes with this so much critical data. At that time, he might be getting some trouble to analyze the data. So that's why Dr. Badruddin sir, our respected participant, daily participant, is interested. And his suggestion is very good for us. DP like 5 days program we will organize. Only you are the resource person, and that will be exclusively for the researchers. We will advertise it before few days so that it will be more benefited. Because I am reading a message from a resource person, Sweta madam. Can someone help me quantitative analysis for my PhD? I am doing it in the topic of urban forest. She is also very much needed to analyze the data, and she messaged me. We published this on our research group. So everyone, those who are doing research, having so much huge data, and for proper prediction and proper analysis of data, they can get help from this also. I will give contact number to you also. If there are some commercial services also, she will take help and for completion of her PhD. Thank you, madam. Because of this resource webinar series, we are getting so much experts of every field, and you are one among that. It's very needed one for those who are doing research. Thank you, madam, for accepting our invitation, and very simply you have explained this topic, because you compared like this Excel. Really it is like Excel. Those who are using basic Excel, they can identify the command, they can more easily understand the command, they can go ahead for analyzing data. It's very technical session, useful session, and all the teachers, those who are from all faculties, but they get at least knowledge of that what is this software, how it can be used, how data is normalized, what types of data there, how we analyze the data. So every basic thing, though they always need like this. Normally we use Mendeley desktop, all these research softwares, so it is most useful in our field. Thank you, madam, for joining here, and those all the
participants here like Sudhakar Gade sir, Nilima Dikshit madam, Prashant Ughade sir, Smita Patil madam, Dr. Badruddin Ahmed sir, Chaudhary sir, our college participants, teachers, those who are joined here. Thank you madam. With permission of all the you and all the participants, we will stop here. Thank you madam.